मंत्री जी, सभापति जी, मैंने मंत्री जी के वक्तव्य को बहुत ध्यान से सुना है। उसमें शब्दों की भरमार तो है, किंतु संवेदना नहीं। कम से कम वो संवेदना तो बिल्कुल नहीं जिसकी हमें आपसे अपेक्षा थी। वो संवेदना बिल्कुल नहीं जिसकी श्रीलंका के तमिलों को आपसे अपेक्षा थी। सभापति जी, इससे पहले कि मैं उनसे प्रश्न पूछूं, मैं ये बताना चाहूंगी कि मेरे मन में ये विषय उठाने का विचार आया कैसे। श्रीलंका में तमिलों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार की बातें हम पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कुछ दिन पहले मैंने टीवी पर एक दृश्य देखा, एक विजुअल जो दिल दहलाने वाला था। सभापति जी, शायद आपने भी देखा हो और मेरे यहाँ सदन में बैठे हुए कुछ अन्य साथियों ने भी देखा हो। उस दृश्य में यह दिखाया गया था कि हमारा एक तमिल भाई समुद्र की तरफ पुलिस वालों द्वारा धकेला जा रहा था। वो उसे समुद्र में डुबोना चाहते थे। वो पीछे भागता था तो उसके सिर पर लाठियां बरसाई जाती थी। वो करहाता था तो दोबारा उसको लाठियों से मारा जाता था और मार मार कर उन्होंने उसे समुद्र में धकेल कर ही दम लिया और बाद में उसकी लाश तैरती हुई समुद्र के किनारे आ लगी। यह दृश्य था जिससे मेरा कलेजा कांप गया। उस समय मुझे याद आई तमिल साहित्य के एक बहुत बड़े लेखक, बहुत बड़े कवि सुब्रमण्य भारती की एक कविता, क्योंकि मुझे उनकी कविताएं पसंद बहुत हैं। मुझे उनकी कविता की 4 पंक्तियां याद आई। शायद नारायण स्वामी उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे, मेरे तमिल भाई उसको अप्रिशिएट कर सकेंगे। इस समय जिस संवेदना की बात हो रही है, गुजरात और बाकी चीज करके कृपया उसको डाइल्यूट मत करिए। जिस वेदना के साथ मैं इस बात को रख रही हूं, उसमें अगर आप साथ नहीं दे सकते तो कृपया मौन रहिए। प्लीज नाउ डोंट डिस्टर्ब। कांग्रेस पार्टी के लोगों को तमिल के प्लीज ऑनरेबल मेंबर, प्लीज सिट डाउन। Don't disturb the honorable member, please. कोई तमिल के लोगों से आपके लगा नहीं। सभापति जी, No, one minute, please. You don't सभापति जी, intervene. मैं आपका संरक्षण चाहूंगी। बहुत गंभीर मसला बहुत संजीदगी से यहाँ उठाया जा रहा है। Please tell your members also not to intervene. I am there. Honorable Minister, please sit down. Please don't disturb her. करना क्या जरूरी है? बार-बार गुजरात का उल्लेख करना जरूरी है। सभापति जी, Please continue now. Please continue. आप बैठ जाओ। राजनीतिक मोटिव बनाते हैं। Honorable members, आप बैठ जाओ। आप Please सभापति जी, continue. मैं चाहूंगी जितना संजीदा ये मसला है, सदन उतनी ही संजीदगी से इसको सुने भी। मैं आपसे कह रही थी कि सुब्रमण्य भारती की स्वतंत्रता संग्राम में लिखी हुई एक कविता है, जिसकी 4 पंक्तियां मैं यहाँ पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। सोंदे सहोदर रहड़ तुम्बतिल सागल कंडुम सिंदई इरंगा रेडी किल्लिये सेमई मरंदा रेडी। किल्लिये सेमई मरंदा रेडी। सभापति जी, इसका अर्थ है कि अपने भाइयों की पीड़ा देखकर जिस व्यक्ति का दिल नहीं पसीजता, उसकी आत्मा मर चुकी होती है। मुझे उस समय यह ध्यान रहा कि अगर इतना दर्दनाक दृश्य देखकर भी मैं सदन में चुप रह जाऊं, तो वाकई कहीं ना कहीं मेरी आत्मा मर चुकी होगी। उसी दिन मैंने तय किया था कि इस विषय पर मैं जरूर नोटिस दूंगी, और मैंने ध्यानाकर्षण का नोटिस भी दिया, मैंने 193 का नोटिस भी दिया। और मुझे धन्यवाद देना है स्पीकर साहिबा को, जिन्होंने मेरा यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का नोटिस स्वीकार किया और आज इस पर हम लोग चर्चा कर पा रहे हैं। सभापति जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूँ। मेरा पहला प्रश्न ये है कि आप जानते हैं कि श्रीलंका में युद्ध तो सरकार ने जीत लिया, लेकिन शांति अभी आना बाकी है। आपने अपने प्रारंभिक वक्तव्य के पहले 3 वाक्यों में ये कहा है कि वहाँ घावों पर मरहम लगाना होगा, वहाँ शांति की प्रक्रिया लानी होगी, और आपने अंतिम पैराग्राफ से पहले कहा है गवर्नमेंट इज कीन टू सी द रिवाइवल ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस इन श्रीलंका
which will meet the legitimate interests and aspirations of all communities, including the Tamils and the Muslims, within the framework of a united Sri Lanka. आपने कहा कि भारत सरकार ये इच्छा रखती है कि वहाँ राजनीतिक प्रक्रिया बहाल की जाए श्रीलंका में, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, केवल इच्छा रख के हमारे कर्तव्य की इतिश्री हो जाएगी? हम उस इच्छा के लिए प्रयास क्या कर रहे हैं? हमारे यहाँ सदन के नेता, भारत सरकार के वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी कोलंबो गए थे, कोई बयान नहीं आया उसके बाद विदेश मंत्रालय से उनकी वार्ता के बारे में। मैं सोच रही थी आज आप यहाँ जो बयान दे रहे हैं उसमें कम से कम इसका जिक्र तो होगा कि प्रणब मुखर्जी जब कोलंबो गए और महेंद्र राजपक्षे से मिले तो उन्होंने क्या बात की, क्या इस रिवाइवल ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस के बारे प्रणब मुखर्जी की कोई चर्चा उनसे हुई? अगर कोई चर्चा उनसे हुई तो उसका क्या नतीजा निकला, उसके बारे में कुछ तो कहा होता। आपने तो नाम तक नहीं लिया। प्रणब मुखर्जी कोलंबो गए भी थे, ये भी नहीं लिखा, तो हम कैसे माने कि आप ये इच्छा रखते हैं? इसलिए मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि अगर भारत सरकार इच्छा रखती है तो उस इच्छा के लिए प्रयास क्या कर रही है, और प्रणब मुखर्जी जब महेंद्र राजपक्षे से मिले तो उन्होंने इसके बारे में क्या किया और वो वार्ता कहाँ तक पहुँची? मेरा दूसरा प्रश्न उन कैंपों के बारे में है जिनका जिक्र आपने अपने वक्तव्य में किया है। सभापति जी, वो कैंप्स नहीं हैं, वो कंटीले तारों वाली जेलें हैं जिन्हें तमिल में मुल्लवेली कहा जाता है। मुल्लवेली वो बार्बेड वायर्ड प्रिजन्स हैं। आपने कहा है कि वहां से 1,45,000 लोग अभी हैं, 1,50,000 चले गए हैं, लेकिन आपने शब्द इस्तेमाल किया इट इज अंडरस्टूड, ये समझा जाता है। ये डिप्लोमेटिक भाषा नहीं है, सरकार का अधिकृत बयान नहीं है। समझा जाता है कि भाषा अंदाजों पर आधारित होती है, अटकलों पर आधारित होती है। सरकार जब सदन के अंदर अपना बयान देती है तो निश्चितता के साथ कहती है कि कितने लोग चले गए और कितने लोग हैं। मेरी अपनी जानकारी के अनुसार अभी भी 2 से 2.5 लाख के करीब लोग इन तथाकथित कैंपों में रह रहे हैं, लेकिन आपने कोई जिक्र नहीं किया उन कैंपों की दुर्दशा का। वो जो मुल्लवेली, वो जो जेलें हैं, उनके अंदर की परिस्थितियों का। सभापति जी, वहां साफ नहीं, सफाई नहीं, वहां डॉक्टर नहीं, दवाई नहीं, वहां पानी नहीं, वहां नर्सेज नहीं। किस तरह के हालत में वो रह रहे हैं? एक सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश वहां होकर आए, उन्होंने उन कंडीशंस को अपॉलिंग कहा है। आप जानते हैं इन 2 लाख लोगों में 50,000 बच्चे हैं, और 50,000 बच्चों में 1,000 वो बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं। ये बच्चे युद्ध की राख की सुलगती हुई चिंगारियां हैं। मंत्री जी, इस राख को शांत कर दीजिए, वरना इस चिंगारी में से अगर एक चिंगारी भी सुलग गई तो वापस तबाही हो सकती है, और मैं नहीं चाहती कि वहां तबाही हो। लेकिन मुझे याद आता है सन 1983 का वो तमिल विद्रोह, जब 3 तमिल बागियों ने जेल में खड़े होकर ये कहा था कि हम अपनी आंखें दान दे देना चाहते हैं ताकि हमारे मरने के बाद भी हम उन आंखों से अपने स्वतंत्र राष्ट्र को देख सकें। तो उन तीनों की आंखों में चाकू घोंप करके वो आंखें निकाल दी गई थी, उन्हें नेत्रहीन कर दिया गया था। आंखें तो उन्होंने खो दी थी, लेकिन वो तमिल लोगों के नायक बन गए थे। कुट्टुमणि, जगन, तंगदुरई, इन तीनों के नामों पर लोगों ने अपनी संतानों के नाम रखने शुरू किए थे। मैं नहीं चाहती वो कहानी श्रीलंका में दोहराई जाए। श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, बहुत अच्छे संबंध है हमारे उससे। हम श्रीलंका की संप्रभुता का सम्मान करते हैं। हम वहाँ आतंकवाद पनपने की पैरवी नहीं करते हैं। पड़ोसी देश में शांति होगी तो हमारे यहाँ भी शांति होगी, लेकिन जैसा व्यवहार हम इन बच्चों के साथ करेंगे वैसा ही भविष्य हमारा बनेगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि केवल 500 करोड़ रुपया देकर के हमने अपना फर्ज अदा कर दिया, ये नहीं। इन कैंपों की दशा दुर्दशा पर निरंतर निगरानी रखने की जरूरत है। इस पर सरकार क्या कर रही है, ये मेरा दूसरा प्रश्न है। और मेरा तीसरा प्रश्न है आपसे, आपने इसमें एक तमिलनाडु से गए हुए प्रतिनिधिमंडल की बात की है। सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहती हूँ
श्रीलंका के तमिलों की ये समस्या केवल तमिलनाडु की नहीं है, केवल दक्षिण भारत की नहीं है, केवल चंद राजनीतिक दलों की नहीं है। अगर ये समस्या केवल तमिलनाडु या चंद राजनीतिक दलों की होती तो उत्तर भारत से आने वाली बीजेपी की सदस्य मैं इस विषय को यहाँ नहीं उठाते। ये समस्या देश की है, ये समस्या मानवता की है, ये समस्या ह्यूमैनिटी की है। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब एक प्रतिनिधिमंडल वहां गया तो उसे सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल क्यों नहीं बनाया गया? अगर सारे के सारे लोग जाते, सभी दलों के लोग जाते, तो वहां जाकर उन्हें उनकी पीड़ा ही देख कर आते, उनको ढांढसी बंधा कर आते। लेकिन आपने इसे संकीर्णता में बांधने की कोशिश की है। आप इसे चंद राजनीतिक दलों तक और दक्षिण के एक प्रांत तक सीमित रखना चाहते हैं। ये संकीर्ण सोच हमें कहीं नहीं ले जाएगी। इसलिए मेरा तीसरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या इस भूल को सुधारते हुए आप सांसदों का एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल वहां भेजने का काम करेंगे, जो अपनी आंखों से जाकर के वहां देख करके आए और अंदाजे और अटकलों के अलावा स्वयं उनको कुछ सुझा कर भी आ सके और यहाँ आकर आपको भी बता सके। और इसके साथ ही मेरा सवाल यह है कि जो प्रतिनिधिमंडल गया था उसकी रिपोर्ट भी आपने आज तक सार्वजनिक नहीं की। ऐसा क्या रहस्य है उसमें? हम लोग जानना चाहते हैं। वो हमारे साथी थे, एमपीज थे जो वहां गए। तो इसलिए इसी के साथ मेरा प्रश्न यह है कि आप उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करिए और उसके साथ साथ एक और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की बात करिए। मेरा चौथा और आखिरी प्रश्न है कि आप जितनी मर्जी सुविधाएं इन कैंपों में जुटा दें, वो समस्या का आखिरी हल नहीं होगा। समस्या का आखिरी हल तब होगा जब ये लोग अपने घर लौटेंगे। और आपने अपने वक्तव्य में ये बात कही है, अपने घर में असुविधा काट करके भी लोग चैन की जिंदगी जीते हैं। बाहर जितनी मर्जी सुविधाएं जुटा दें, असंतुष्ट ही रहते हैं। आपने कहा कि जनवरी 2010, क्या कोई मॉनिटरिंग हो रही है कि जनवरी 2010 तक वो सब अपने घर चले जाएंगे? मुझे नहीं लगता। इसलिए आज श्रीलंका के तमिल केवल एक सवाल पूछ रहे हैं आपसे, और उसी सवाल को मैं आपसे पूछना चाहती हूं, वो कौन सा दिन होगा जिस दिन श्रीलंका की जेलों में रह रहे ये तमिल अपने घर लौट सकेंगे? क्योंकि उस दिन मुझे आशा की वो करण दिखेगी कि हाँ, वाकई श्रीलंका के तमिलों का समाधान होगा। उन श्रीलंका के तमिल भाइयों को ये बात समझ में आ जाए कि मैं क्या सवाल पूछ रही हूँ। इसलिए तमिल में मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। मुल्लवेल्ली कुल अडाई पट्टी रुक्कुम तमिल हड़ विड़दलाई आही वीड़ तिरुम्बम नाल एन नाल एन नाल। थैंक यू। Honorable Minister. Sir, the House has discussed a very important question which is engaging the attention of a vast majority of the people of this country. At the outset, let me state this fact, that Government of India is not looking at this issue as a Tamilian issue. It is an issue which concerns the nation. Hence, our response would be a national response, not a sectarian or provincial response. And to that extent, the Honourable Member Srimati Sushma Swaraj raising this issue certainly lends credibility to my assessment that it is a national issue. And she has quoted from Subramanya Bharati. We
in the southern part of India, we have drawn inspiration from the writings of Subramanya Bharati. Not necessarily from the people of Tamil Nadu, but the whole of the southern provinces and the northern provinces, all India. Subramanya Bharati is a national poet of eminence, a national poet of eminence. So when we quote Subramanya Bharati, the quote should only be to further integrate the nation as one entity, and that is the Indian entity. And to that extent, Srimati Sushma Swaraj has served a very important purpose in quoting Subramanya Bharati. Cutting across party lines, all of us are concerned about the plight of the Tamil brothers and sisters in Sri Lanka. Things are not all that well in Sri Lankan Tamilian camps. We have been engaging government of Sri Lanka time and time again to know for ourselves as to the various measures that they have taken to resettle the displaced persons of the Tamil-speaking Sri Lankan citizens. Right from day one, we have been given assurance by the Sri Lankan government that within 180 days, that the 300,000 of the people who are in the camps would be sent back to their villages and to their hamlets. Well, we still are hopeful that they would be able to complete that mission of rehabilitating these 300,000 people within that time frame of 180 days. But I know that it is a very difficult proposition. There are so many things which are involved. As a result of that, with the best of intentions, government might not be in a position to live through to that promise of 180 days. But the larger question is that if not within 180 days, they will have to be rehabilitated. They cannot and we cannot expect that our Tamilian brothers in Sri Lanka will remain in camps for a long time. And we are depending upon government of Sri Lanka. Well, we know that Sri Lanka has gone through a very troubled 2.5 decades. Internal strife, civil war, conflict, bloodshed. Not only was confined to Sri Lankan borders, it flew out of Sri Lanka also. We lost one of the most promising leaders of our country, Sri Rajiv Gandhi, because of this problem. So I share the anguish, the agony that many members have felt about what is happening in Sri Lanka. Well, the Sri Lankan government has said that they are making their efforts
to bring about a reconciliation. The reconciliation is something which Indian government has always been insisting upon. We want the Sri Lankan government to take proactive, positive steps to bring about a political settlement with the Tamil minorities in Sri Lanka. Now that they have been able to win the war within, I think the victor must be magnanimous, he must be just, and the weak will have to be protected. The victor must be just and the weak protected. This is the line that we are taking with Sri Lankan government. A number of issues like the 13th Amendment. Well, Government of India wants Sri Lankan government to go beyond the 13th Amendment. They should look in terms of 13th plus in order to bring about a rapprochement between the Sri Lankan Tamils and the government of Sri Lanka. It would be in their interest. It would bring them permanent peace, tranquility, trust, and understanding. Mr. Alongovan mentioned about confidence building measures. I think that's what needs to be done in Sri Lanka today. Camps, Srimati Swaraj mentioned about the pitiable conditions of the camps. Well, the honorable member from the DMK has clarified how some of the MPs did go to Sri Lanka. It was not a Government of India's initiative. It was surely the initiative that was taken by the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, the elder statesman of the country, Sri Kalangara Karunanidhi. So that has served a useful purpose. Even though President of Sri Lanka wrote to the Chief Minister of Tamil Nadu to send a delegation to invite him to come there, but in his wisdom, he sent a delegation consisting of some members of parliament and others, and it has served a useful purpose in the sense they are able to appreciate or understand and then to convey to many of us who do not know what the life in the camps is like. And based on their recommendations, we will further take up with the Sri Lankan government how life in the camps could be further improved, but at the same time insisting on Sri Lanka that all of them, all the 300,000 who are in the camps should be sent back to where they belong in their own country. I think that is the underlying principle we are adopting. Mr. Ganesh Murthy, honorable member, made mention of equal rights. Yes, we cannot comprehend a situation where Tamil-speaking people become second-class citizens in Sri Lanka. There has to be equal rights. They have to be equal citizens of that country, and they should participate in the mainstream of activities in that country. Mr. Varadarajan mentioned about human rights. Yes, we have heard about human rights violation. Whenever we hear of such reports, we immediately bring it to the notice of the Sri Lankan government. Srimati Sushma Swaraj mentioned about the visual
about a boy being tortured, I think it has come to my notice also. And we have verified from our own sources. And our source says that it was a case of police excess. It was a case of police excess. There was nothing to do about ethnic factors. एथनिक होता तो इतना नहीं था कि सिंगल ही कर रहे हैं, ये तो पुलिस वाले कर रहे हैं, तो इट इज़ ऑल द मोर सीरियस। मैंने शुरू में कहा पुलिस वाले लाठियां मार रहे थे, ये पुलिस एट्रोसिटी का केस है, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है ना, इट बिकम्स मोर सीरियस। A mention was made by one honorable member that the finance minister had gone to Sri Lanka, whether he was able to talk about. Sushma ji, I think she did. No. The finance minister had gone there to deliver an endowment lecture, just like a couple of years back, the honorable present home minister was also invited to make that endowment speech. And naturally, when the finance minister met President Rajpaksha, he did take up the question of the Sri Lankan Tamils, and we have brought to the Sri Lankan president's notice whatever we have heard from our own sources, from our members of parliament, and from various political parties, and this has been duly conveyed to them. With reference to question of grants, how is this 500 crores, how is it being spent? I think there is a mechanism which we have put in place where there is monitoring of whatever expenditure or whatever grants that we have given or we intend giving to Sri Lanka is being accounted for, And then we are also using international agencies like the United Nations Commissioner for Refugees. It's one of the sources, whom we depend upon for monitoring the developments there in that country. A mention was made about fishermen's problems. I think we are concerned about the fishermen's problem. There was an understanding about the fishermen's question in Kachativu in 2008, October. And we have stood by that agreement of 2008, and the facts bear out that there has been a steep reduction in terms of the seizure of boats and then arrest of our fishermen willy-nilly crossing the Indian maritime territorial waters. While in 2008, 334 boats were seized and 1,456 of our fishermen were apprehended by Sri Lankan government. In 2009, till the end of November, we have had only 31 boats and 124 fishermen apprehended. Witnessing this sharp decrease, we have continued to emphasize to the Sri Lankan government the need to scrupulously adhere to the October 2008 understanding between our two governments. We have earlier submitted that we have insisted on Sri Lankan government
that full implementation of the 13th Amendment, and the Sri Lankan government has promised to do exactly that. Though they have certain reservations, but we have also urged them to go beyond the 13th Amendment and undertake a credible devolution of powers. An allegation was made that government had actively collided with the government of Sri Lanka against the Tamil community. Well, all our effort is directed exactly to support and defend our Tamil brothers and sisters in Sri Lanka. And I am sure that we respect Sri Lanka as a sovereign country, and we have cordial relations with Sri Lanka. And this relationship dates back to times immemorial. As one of the honorable members put it, we have civilizational links with Sri Lanka. We have a traditional links with Sri Lanka. And it is the intention of Government of India to continue and further strengthen those links between Sri Lanka. And I am sure the Sri Lankan government, when it deals with other powers, we are not concerned. Our relationship with Sri Lanka is between two sovereign countries on a bilateral basis. They understand our sensitivities. They understand our concerns of our own security, because our security and Sri Lankan security, at some point, they merge. Hence, in whatever the Sri Lankan government does, I am sure that they will bear in mind the sensitivities of India government's concern and the Indian nation's concern. Sir, I think I have made a honest attempt to meet very many points, but if there are some points on which I have not been able to respond, I certainly will go through the various suggestions that the honorable members have made from various sides, and then I will certainly be able to respond to them in the days to come. Thank you. Shri Advani ji. बता दीजिए कि क्या सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल आपने पहले नहीं भेजा, महेंद्र राजपक्षे जी का था या करुणानिधि जी का था, लेकिन हम लोग सब जाकर के वहाँ अपने आँख से स्थिति देख आए। इसके लिए क्या कोई सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भारत सरकार भेजेगी? ये मैंने पहले भी पूछा था और दोबारा पूछ रही हूँ। It's not a debate. Please, please. She was the mover. That's why he asked questions. Please. Honorable Minister. Yes, yes. Initiative of the Government of India. Will the Government of India send another delegation of all party members of Parliament? Well, the honorable member has made in a statement also earlier about sending an all-party delegation to Sri Lanka. Let me say that we will certainly consider.